let me take you towards our first panel discussion of the day, which is about talent acquisition reimagined, which is like learning from yesterday for a better tomorrow. It's learning from yesterday for a better tomorrow. I would like to call upon the panelists, Ahmed Ali Zia, CEO, People and Business Partnering, HRSG, Asif Zahoor, HR Head, Amreli Steels, and Ashar Razi, Director, HR, IBEX. Adil Riaz, Director, HR, K Electric, will be moderating this discussion. Please welcome them all on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. So my name is Adil Riaz. I am the Director HR for the distribution business in K Electric. Unfortunately, हमने तैयारी नहीं की है. So there will be a few of the surprises जो मैंने बनाए थे. So I would like to start with the collaboration approach we had actually, which was we were disorganized and disoriented. So I think this is how we operate in this environment. Post-COVID scenario, अब जिससे भी पूछते हैं कि पता चलता है कल जो है वो उससे हाथ मिलाया था तो वो आज बीमार पड़ा हुआ है. So we are back back to the previous normals or abnormal situation जहाँ COVID की situation थी. अब ये जो topic है imaging वाला वो I don't know वो अब किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे, but I think आप लोग भी अपना सारा ख्याल करें in terms of being safe. I do understand कि कल मैं पढ़ रहा था कि जी either हम social नहीं हैं तो इसलिए कोविड सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, हमें लग नहीं रहा, या फिर हम जो है वो बहुत रेजिलियंस हमारी इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई है, जिसको नहीं है, वरना आई थिंक एवरी सेकंड थर्ड पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम. सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज का सेशन. वी हैव आवर टू पैनलिस्ट हियर फॉर द टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज टैलेंट एक्विजिशन reimaged. Learning from yesterday and for the better tomorrow. Ahmed bhai nahi aaye हुए हैं, but he's on his way, so he will join. Asif Zahoor, head of HR Amreli Steel, is here, and Ashar Razi, director HR IBEX. I would like to welcome you all here. Talent acquisition हमारी नज़र में जब हमने कोविड सिचुएशन में आज से COVID-19 2019-20 में जब we entered into the situation, so we all were surprised. We didn't have our business continuity processes. So सबसे पहले organizations जो बैठी जिनके अच्छी structured organizations थी, they started to mull over that how do we actually use this document which was made by few of the consultants. business continuity जिनके पास नहीं था उन्होंने कहा छाप लो किसी का, क्योंकि ज़लज़ला सैलाब और आफत पे तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेसेस डिफाइन हुए हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की आफत पे जो शायद सदियों में आती होंगी, मेरे ख्याल से वो सिचुएशन हमारे पास नहीं थी. सो वी स्टार्टेड ड्राफ्टिंग दोज बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेसेस. सो ज़फ़र साहब, वेलकम टू द फोरम. मैं हमेशा मना करता हूँ कि सीनियर लोगों को ना बुलाया करें, हमें तैयारी करके आना पड़ता है और हमें डर भी लगता है. So, Zafar Saab, thank you very much for coming over. So I have to be very cognizant of the fact that Zafar Saab is sitting here. Sir, thank you very much. Sir, thank you very much. So, हमने उसके बाद we entered into the new normal sort of a situation whereby दफातर बंद हो गए और हमने अपनी way of living को digitization and technology की तरफ लेके जाना स्टार्ट किया, जिसमें से recruitment and onboarding was one of an important element. ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहे हैं बिल्कुल, और यहीं पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. So जब हम बात करते हैं इसकी कि how do we reimage करेंगे हम इसको, उस पे के इन 2 सालों बाद क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, उस पे हम आज डिस्कशन करते हैं. So I would like to actually put in my first question about Asif Saab, that what is your take on that? Then I will ask you and then I will have few questions. So जो structure रहेगा
So please, over to you. That what is your take on that? Mike, Assalamu alaikum. Am I audible? Thank you very much, Arthur. It's a very interesting question. मैं अगर इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे देखूं तो टैलेंट तो हमेशा से ही चैलेंज रहा है. पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं. ये एक बिल्कुल नई सिचुएशन हमारे लिए आ गई कोविड के फॉर्म में. बट टैलेंट को एक्वायर करना, सोर्सिंग करना, इट्स ऑलवेज बीन. हमने जब से मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो HR के ऊपर प्रेशर होता है वो टैलेंट एक्विजिशन पे होता है या सोर्सिंग पे होता है. तो हमने ओवर द टाइम इन पर्सपेक्टिव्स को मैनेज करना और इसको ओवर द टाइम हमें ये देखना कि हम किस तरह से इन लाइंस को, अपने चैनल्स को ओपन कर सकते हैं. दैट्स द की. फिर चैनल को, अपने टैलेंट को एक्वायर करना है, देन उसको रिटेन रखना, दोनों पैरेलल साथ चलते हैं. मेरे लिए हमेशा से for me, for our organization, for the corporate world, it's important to find out more innovative ways to get people on board. उसमें बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं. बट टू मी ये हमेशा से चैलेंज रहेगा. मतलब पर्सपेक्टिव चेंज होते रहेंगे. कभी ये वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा, कभी कोविड के फॉर्म में आ जाएगा, कभी किसी और फॉर्म में आ जाएगा. तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइंस को प्रिपेयर रखना है, सो दैट वी हैव राइट चैनल्स के जहाँ से हम टैलेंट तक पहुँच सकें और टैलेंट को एक्वायर कर सकें. दैट्स राइट. so ठीक है, excellent point. But maybe if I ask you the question, what is your take? And जिस तरह इन्होंने कहा कि उस टैलेंट तक पहुँचना है, so what is your modus operandi in terms of acquiring the talent in this kind of situation? Adil Saab, I would like to continue on what my friend and colleague just said. चैलेंज डेफिनेटली है, लेकिन चैलेंज उस तरह से है जिस तरह पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक जनरेशन गैप होता है, उसी तरह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या हायरिंग मैनेजर और कैंडिडेट का एक गैप होता है. वो हमेशा से रहा है. तो चैलेंज ये है कि वी नीड टू ब्रिज दैट गैप, एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस. तो अब बहुत सारे I won't take up too much time. क्विक जल्दी से आपको बताता हूँ. बहुत से recent examples जो पिछले 2 सालों में हुए हैं. कैंडिडेट्स जब इंटरव्यूज के लिए आते हैं या जूम पे कर रहे होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स में जब वो सवाल नॉर्मली 10 साल पहले पूछते थे कैंडिडेट से आकर में कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो वो शर्मा के अपनी गाइड हिट करके कहता है नहीं जी, इट्स ऑल अंडरस्टूड, वेरी क्लियर. अब इस तरह नहीं होता है. अब दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इन फैक्ट एक काउंटर इंटरव्यू हो जाता है, व्हिच इज वेरी हेल्दी. और उसमें एक सवाल ये होता है कि जी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी देती है आपकी कंपनी, रिमोट वर्क के कितने चांस हैं, बिकॉज आई हैव माय पर्सनल लाइफ टू टेक केयर ऑफ एज वेल. तो इफ वी आर स्टक इन द ओल्ड स्कूल थॉट कि नहीं जी आपने सुबह तक 9 बजे आना है और जब तक मैं हूँ तब तक बैठना है और फॉर्मल कपड़े पहन के आना है, तो दैट विल बी डिफिकल्ट इन दिस डे एंड एज. एंड considering the circumstances, we as the employer or the hiring manager or HR need to understand that things have changed drastically. So we need to change with that as well. Beautiful जी. So ये तो हमारे सिचुएशन हो गई द टैलेंट एक्विजिशन, क्योंकि हम ये रहे हैं, हमने समझने की कोशिश की, हम संभले हैं, खड़े हुए, हमने कपड़े झाड़े हैं, फिर खड़े हो गए हैं. जिस तरह हम खड़े हो गए इस तरह कैंडिडेट भी खड़ा हो गए, राइट. और कैंडिडेट को भी समझ आ गई उसने करना क्या है. डिजिटाइजेशन की तरफ चले गए हैं लोग. पीपल हैव एक्चुअली ट्राई टू एक्वायर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स वेयर बाय, जैसे आपने कहा, काउंटर क्वेश्चंस. सो नाउ the people have actually entered into the digitization and they have the various qualifications in terms of to prove themselves. So what is your take in terms of redefining their reward strategies? Just for example कि अब वो जो 100 रुपए का बदला था वो शायद 80 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है. So आप क्या कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में to actually hire or attract those people? क्योंकि अब आसान ज़बान में 4 बंदों की जगह 1 बंदा काम कर रहा है, उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं. So how are you tackling this sort of a challenge? Right.
you're absolutely right. Lean होते जा रहे हैं organizations, workforce कम होता जा रहा है, layoffs भी बहुत हुए और वो जो हमने concept देखा है about the Great Resignation 2020 से पिछले 2 सालों में बेतहाशा लोगों ने अपनी jobs छोड़ी हैं for better opportunities or for their own startups or their own business or freelance work. So that is definitely a challenge. लेकिन what certain organizations are benefiting from is by keeping up the pace. For instance, I'm from the tech and IT sector. तो हमारे पास क्योंकि हमारी तो कुछ जिसे कहते हैं आम ज़बान में चांदी हो गई है during this last 2-3 years because of e-commerce and all of that. Tech has really grown a lot. We've gained a lot of business. So instead of growing our infrastructure and growing our offices and CT spaces, we've started moving people to remote work. ताकि हमारे expenses maintain रहे and we are able to we can afford to pay more as per the demands and the market. तो एक तो तरीका ये होता है कि so when you say that afford to pay, so आपका क्या तरीके का था? Have you actually conducted some sort of a benchmarking for them? What's going on in the market? इस तरीके से तरीका वारदात आप लोगों का क्या रहा है? सर वारदात इस तरह करते हैं कि salary service, of course, compensation service करवाते हैं with competitor तो नहीं कहना चाहिए, but similar organizations to get a feel of where we stand. So ये नीड पहली दफा आई या ये continuous basis पे चलता रहा है? नहीं, we've been doing it quite regularly, लेकिन इन पिछले 2 सालों में aggressively किया है. Very good. So ये एक तरीके से आपकी इसकी नीड arise हुई आपकी, so that's why we are doing that. In fact, हमने 6-8 महीने के gap से किया instead of annually. So coming back to Asif, there are two type of actually workforce in any organization, especially organization manufacturing concern. So हम ज़्यादातर इस audience की बात कर रहे होते हैं जो they are governed by the terms and conditions of their employment. So there is a bigger population who are governed by the statutory regulations, the typical workers. ये क्या इम्पैक्ट आया इसकी रिक्रूटमेंट पे, इसकी लेबर पे? क्योंकि मिडिल ईस्ट मार्केट फिर से थोड़ी सी खुली, सच एज कतर, ओमान, सऊदी, यूएई, ये इनमें मैन पावर मैंने नोट किया कि जाना शुरू हुई है, एक्सपोर्ट होना फिर से स्टार्ट हुई है क्योंकि मार्केट आया बिकॉज इजराइल और वॉट एवर. बट लेबर मैं देख रहा था जो स्किल्ड लेबर थी वो निकल रही है मुल्क से बाहर. सो आप उस स्किल्ड लेबर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या वही एक मशीन के ऊपर जहाँ पर एक टिपिकल बंदा काम करता था उसी तरीके से काम कर रहा है? Have you actually invested into developing various yardsticks for the sensitivity analysis to define the workforce yet making an impact on the bottom line? पहले तो मैं पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करूँगा बिकॉज यू नो द इम्पैक्ट हमारे ऊपर, इनको तो आईटी का एक एडवांटेज हुआ. मेरे एक कॉलीग हैं बहुत अच्छे, मतलब इनकी टेक इंडस्ट्री में काफ़ी वो, बट हमें एज बी जो सर्विस प्रोवाइडर था आईटी उसमें बहुत इम्पैक्ट आया. टर्नओवर बहुत बढ़ गया हमारा बिकॉज जॉब बहुत मुख्तलिफ हुई, जॉब के स्किल लेवल, फिर आपकी जो ऑटोमेशन है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. तो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज आईटी के अंदर डेफिनेटली आया. वहाँ पर रिटेंशन का चैलेंज बहुत बड़ा बना. तो हमें कुछ जॉब्स को रीमॉडल करना पड़ता है. तो यू नो उनके साथ बैठ के, लाइन्स के साथ बैठ के यू नो जॉब्स को रीमॉडल किया, बट स्टिल आईटी मार्केट बहुत फ्लरिश कर रही है. मैं इस वक्त मतलब अगर हमारी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर हुई है. तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे रिवॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बात की थी, रिवॉर्ड्स डेफिनेटली आपको क्रिएट करने पड़े. एम्प्लॉय वैल्यू प्रॉपोजिशन की किसको क्या चाहिए, मतलब वही एम्प्लॉई जो मिलेनियल्स हैं वो कुछ और मांग रहे हैं, वो सेलिब्रेशन मांगते हैं. बाकी दूसरे जो ओल्ड स्कूल है वो उनको कुछ और चाहिए रिटेंशन के लिए. तो आपको रिवॉर्ड प्लान बहुत मुख्तलिफ करने हैं. तो यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि आपके हर बंदे को जाके आपने देने 100 रुपीज़ ही है, बट 100 रुपीज़ को ब्रेक करके दे सकते. किसको कैसे चाहिए वो आप उस तरह से प्लान करते हैं. कमिंग बैक टू द लेबर पार्ट, या जो हमारी जो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था ना, हमारा जो सेक्टर है वो हाईली ऑटोमेटेड है. बहुत लंबा प्रोसेस है. वी आर नॉट लेवरिंग टैक्सेस. तो 1500 एम्प्लॉइज हैं इन टोटल. तो हमारी जॉब्स तो बहुत डिफाइंड है. कास्टर है तो वो कास्टर जो है वो वहीं पे होगा. वो जॉब बड़ी डिफाइंड है. तो हमें अभी तक कोई चैलेंज नहीं आया.
जो ज़्यादा बट यस यू राइट कि वो मतलब इंडस्ट्री में जो ट्रेंड हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं बाहर, हमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं, हमें तो लोग अभी भी बाहर से कुछ मिल रहे हैं बिकॉज कोविड का इफेक्ट वो प्लस माइनस हो रहा है, तो हमें चैलेंज नहीं आया अपैरेंटली, क्योंकि हमारा प्रोसेस भी बहुत स्पेसिफाइड है। 1500 डिग्री टेम्परेचर के अगेंस्ट खड़े होकर काम करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आपके बड़ी सेट जॉब होती है, लोग बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेरिमेंट करते नहीं। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ओके ऑन दैट, बट यस दिस चैलेंज इज देयर। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास ये होता है कि जो अगर कुछ लोग मूव करते हैं तो पूरे पूरे ग्रुप्स की फॉर्म में मूव करते हैं, दो ग्रुप दोनों तरफ मूव करते हैं, तो हमें अभी तक कोई चैलेंज नहीं है। तो मतलब आपको कोई यार्ड स्टिक्स को रीडिफाइन करने की अभी जरूरत नहीं, अभी फिर वी वर्किंग ऑन। आपने कभी सोचा कि आगे 2-3 साल बाद क्या सिचुएशन होती है? एग्जैक्टली, हमने मीनवाइल की जो सैलरी सर्विस या सैलरी बेंचमार्क्स की बात हो रही थी, वी डिड दैट, हम कर रहे हैं। हम इसको इनफॉर्मली भी करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक एचआरएसडी, हम इनके साथ भी मिलके मतलब उनसे बेंचमार्किंग की भी करते, और कंपैरेटिव ग्रुप, नॉट द होल इंडस्ट्री का एक अलग से करते हैं, बट यस वील आइडेंटिफाई कि कौन-कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सपोर्ट करती है या हमारे बिजनेस के साथ कनेक्शन बनता है, उसको हम जरूर करते हैं। अभी भी हम एक किसी सर्वे पे वी आर पार्ट ऑफ इट, और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि जॉब को कैसे रीमॉडल करना है। See, great, thank you. So, Ahmed Ali Zia sir, I would like to welcome you. Ahmed is CEO. My apologies for being late. It is totally okay. So, Ahmed is CEO and People and Business Partnering at HRSG. आप कहने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे about the old situation, the COVID situation, way forward जो है talent acquisition का उसका impact क्या होगा. So, we have talked about digitization, we talked about the candidates, we talked about the labor, उनका भी एक हक बनता है organization में जिनकी defining of the yardsticks and stuff. So you're into the consulting, you're on the other side of the table. आप ज़रा different नज़र से देख रहे होते हैं चीज़ों को. What is your take in terms of the future of the talent acquisition? वही orthodox style पे वापस हम आना चाहते हैं जो कि मैं समझता हूँ बड़ा effective रहा हुआ है. दूसरा moving forward, since we are entering into digitalization sort of a scenario and digital roles change हो गए हैं, mergers हो गए हैं, yardsticks define हो गई है, sensitivities जो है organization की different हो गई, reduce भी हो रही है, expand भी हो रही है, now people are actually working in a smarter way. So sitting on the so you've been into the industry all your life and now into the consultancy. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि when people start consultancy in their career, so it's just like standing out in the pool and telling people how to swim. So आप पूरी तैराकी करके आ चुके हुए हैं और आप दूसरी तरफ हैं. So how do you see that, Ji, from the bird's eye view? Ji, thank you so much. And as you said, fortunately, I've had the experience of working in the corporate sector for about 28 years, and now for the last 3-4 years, I have been associated with HRSG. So मेरी जो observation है वो थोड़ी सी different है. As we know, the topic we are discussing is talent acquisition reimagined. So while we talk about a lot of new things and very forward-looking techniques and approaches that have been introduced in the market when it comes to talent acquisition, the majority of the organizations that at least we deal with, and we deal with almost 500 organizations from across the country and even outside, are still trying to catch up. So the conventional ways of recruitment are very much in force. Yes, we do talk about a lot of things. Yes, there are a lot of new things that are coming up, new approaches, new technology, AI, machine learning and whatnot, but organizations are still way behind when it comes to adopting those technologies. So we are relying heavily on the conventional approaches to recruitment. The market, if we talk of the market is definitely improving. We never saw a decline, by the way, in the market. So even during the pandemic, the market was very good throughout. As we speak, yesterday me and my team were looking at the positions that we are handling. We are handling about 150 roles at the moment, including about 30% C-suite roles. So the market is good across all the industries and sectors. I think the biggest challenge that both organizations and candidates are facing is engagement, right? So when we talk to the clients, for example, they want to hire the best of the best candidates,
yesterday, right? And then when we start working, our SLA is also very progressive, so we try to provide the best top 3 CVs within 1 week. And then when we submit those CVs, we have to wait for ages. Because, organizations don't come back. Yeah, मुझे तो नहीं कह रहे थे. You know that. हमारा हम कोशिश करते हैं. I was reading an article yesterday. A company like I'm not exactly sure whether it was Walmart or some other company. They call it Project 24, which means they are trying to close a position from the time the requisition is raised till the time the candidate accepts the offer within 24 hours now. And to do that, they have brought down their SLA from 14.5 days to 3.5 days already. So the world is moving in that direction using all the new technologies, because there is an upsurge in the demand of talent. The skills have changed, but the positions, the vacancies, the roles have actually increased in the market. So if you have those that skill set, if you have those new attributes that employers are looking for, there are lots of opportunities available in the market, and there is a big, I would say, race going on when it comes to attracting the best talent. So the key to talent acquisition, in my opinion, remains how closely you engage with the candidates and what experience are you going to provide to the candidates. As a recruiting agency, for example, as a service provider, we try to manage the situation by keeping ourselves engaged with both the organizations and the candidates. We are facing a bigger challenge when it comes to organizations than with the candidates. And that is, I think, a gap that we need to close. It's a joke in our organization. हमने कोविड की सिचुएशन में भी हमने काफ़ी ऑनलाइन टेस्टिंग्स की, हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आए हमारे पास, एक्सपर्ट्स wanted to come back to Pakistan. So this was a joke definitely. So one of the candidates, somebody was actually making fun कि जी यार ये बंदा कहाँ से आ गया? मैंने कहा जी दराज से ऑफर किया था, थोड़ा साइज में छोटा आ गया. So अब मसला ये है कि जैसे हसन से एक दफ़ा बात हो रही थी, योर कॉलीग, सो आपका जो evaluation criteria assess करने का, when you judge your capacity, previous achievements, maybe collaboration and stuff, especially the capacity और recruitment में body language बंदे के ऊपर से नीचे तक, मतलब उस तरीके से नहीं, लेकिन देखना पड़ता बंदे को. So ये human जो interaction है, उसको आप online बंदों को कैसे कर रहे हैं? अब आगे क्या करेंगे? ऐसे करते रहेंगे, इसी में दराज के छोटे बड़े पीसेस आते रहेंगे आपके पास? Mainly, I am a big believer in providing the right balance between technology and human touch. So while we are relying on technology, where there is no other option, but we primarily rely on face-to-face interactions, because that aspect is never going to go away, irrespective of how much you progress in technologies. And I talk to about, on an average, 5 to 6 candidates from different industries, different backgrounds, different age groups, different genders, different sectors every day. So I can tell you that the candidates themselves are not very comfortable with the online interviews and testing processes, especially the video interviews. When you have to submit your CV in the form of a video, that's the biggest challenge the candidates are facing. And I know a lot of very good fresh graduates who could not make it to the final rounds of big companies because they said that they got very nervous when it came to video CVs and video interviewing and gamification even. So the human element is not going to go away. As much as possible, when we submit the list of CVs to the organizations, we make sure that we have interacted with them physically. And depending on the seniority of the role, I personally meet a lot of candidates, my team. So we make sure that, because that's a different vibe, that's a very different feeling that you get when you talk to people face to face. Wherever that is not possible because of the different challenges we have these days, we then rely on video conversations. We do not rely on telephone interactions at all. And
candidates who are reluctant to do that, we drop them. So that's a very clear strategy we have, because that gives you a very different, and we do two parts when it comes to screening of the candidates. First, we do it on the basis of CV. So sometimes we find out that when you look at the CVs, those are very impressive, but when you meet the candidates, it's the other way around, and vice versa. So, and in my experience, having sat on both sides of the table, I can tell you that the real story comes out when you talk to the candidates face to face. So that's something which, as I said, while we really admire all the technology that is there, and we do use it wherever it makes the process efficient. But the human touch is not going to go away, especially when it comes to recruitment. Thank you, so मेरा एक अगला सवाल होगा, it has two parts in it, so maybe Ashar you can actually take, and then maybe Asif you can take on the question. हमने start की discussion अपनी 2019-20 के scenario से, and उसके बाद हमने बताया कि कैसे हमने transform किया, हमने कैसे गिरे उठे झाड़े, हमने क्या क्या changes लेके आए in our talent acquisition philosophies and stuff. हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रीब्रांड किया, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को हमने रीवैम्प किया, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शंस की ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज चेंज हुई, प्रॉफिटेबिलिटीज पे इम्पैक्ट आया, और इसी तरह कैंडिडेट की क्वालिटी ऊपर नीचे होती गई, और डिजिटाइजेशन में एआई की तरफ भी हम आए. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जो इसको रीइमेजिंग की बात कर रहे हैं एंड द फ्यूचर स्टेट, ये अब कैंडिडेट्स की अप्रोच, डायनामिक्स, उनकी स्किल सेट, उनकी कैपेसिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी हुई है. एंड हाउ विल दिस इम्पैक्ट ऑन टू थिंग्स. वन इज योर company culture, how do you maintain that company culture, and especially the diversity and inclusion in the organization. Diversity would not be only related to your women in workforce, khali maybe the disabilities में भी, क्योंकि अब आप ऑनलाइन रोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हम अगर देखते थे कि कोई डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को प्रॉब्लम है, आई एम श्योर दैट वी आर नॉट एट सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, सो वी कैन नॉट एक्चुअली हायर पीपल फ्रॉम अब्रॉड इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिटी, बट अगेन डाइवर्सिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलती है. सो वो ये दो चीज़ें, कल्चर पे और डाइवर्सिटी पे कैसे आपका इम्पैक्ट आ रहा है. सो मे बी एनी टू ऑफ यू कैन एक्चुअली टेक फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट. थैंक यू. आदिल साहब, जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात है, इंक्लूजन की बात है, whether it's gender based or disability, we've always taken very good care of those things. In fact, our office is very disability friendly, कह लें, या even when we were working from the office, we had people with certain special needs. And the same goes for gender. I mean, we have a daycare center as well for single mothers or young mothers who have little babies who want to bring them with them to the office. Uske alawa culture, that was the bigger challenge during these last 2 years. Kyunki pre-pandemic, it was very easy to maintain a good culture, right? Because we were all there. It was easy to engage people. It was easy to interact with them, or different events, or what have you, opinion polls वगैरह. Pandemic में that was initially a big challenge. सब अपने घरों में चले गए हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं. Plus it was such a big change that people were frustrated, or like Suhail said, constant interaction बच्चों के साथ और बीवी के साथ या शौहर के साथ, that was quite taxing and exhausting. Luckily we got over that. लेकिन उसके लिए हमने ये किया कि we had a number of activities done virtually. के point of view से we had yoga exercises, जो हम Zoom पे sessions करते थे, professional fitness instructors को बुला के, having up to 200 people on that hour-long session. तो वो सब अपने घरों से ही Zoom पे को बता रहे थे कि जी आप if you're working on your chair and desk, आपकी exercises करनी है, daily आप क्या योगा कर सकते हैं. We had an IBEX Idol, जिसमें singing competition हुआ था. It was all virtual. So there was a lot of things that we kept
reinforcing our values and our cultures through these programs and these sessions, ताकि वो maintain रहे। 22 में आप क्या वो चीज़ इनिशिएटिव लाना चाह रहे हैं जो आप नहीं कर रहे और आप समझ रहे हैं कि मार्केट भी नहीं कर रही? टैलेंट एक्विजिशन रिलेटेड। That's something we're still thinking about, क्योंकि as things come along, we keep doing that. ये तो हमने अब establish कर लिया है कि we will be working on a hybrid model for the unforeseeable future. क्योंकि हम फिर से मास्क उतार चुके हुए हैं, हम फिर से सैनिटाइजर जेब में नहीं रख रहे हैं, गाड़ी में नहीं रख रहे और हम फिर से हाथ में ला रहे हैं और चप्पलें डाल रहे हैं। सो हम वापस से उसमें सब भूल चुके हैं सिचुएशन को। अब तो खैर ज़लज़ला भूल गए थे जो काफ़ी सालों पहले आया था। तो ये क्या हम इसी तरह चलते रहेंगे? हम कुछ सीखेंगे नहीं? यू नो, दिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट बिकॉज ऑफ द कोविड। मे बी जहाँ पर हमने गलतियाँ करे थे अपने प्रोसेसेस में, वो इंशाअल्लाह ताला की तरफ से हमें शायद सबक भी मिला है कि हम ऑर्गेनाइज को रैशनलाइज भी करें, एफिशिएंसीज भी ड्रॉ करें अपने प्रोसेसेस में। सो कैसे आप लोग इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने बिजनेस पे? Sir, I think as humans we are creatures of habit, और वो habit तोड़ना और वो change को accept करना इतना मुश्किल होता है कि वो एक दफा गिर के उठने से नहीं होता, multiple times गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, and then we eventually जैसे बच्चा चलना सीखता है, तो वो एक दफा में तो नहीं होगा। तो जैसा आपने कहा कि मास्क उतर गए हैं, सैनिटाइजर्स लगाना छोड़ दिए हैं, तो and we're seeing the impact. We're coming back to एक नया वेरिएंट आ गया है, going back towards the lockdown probably, स्कूल बंद होना शुरू हो गए, तो वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, उसके बाद I think eventually हम थोड़ा फासला रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि it's all about habit, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो ही जाएगी। ठीक, great, thank you. As a culture, and yeah, कुछ ऐड करना है इसमें। Your take on number one, the culture, and then impact on the culture, and what is your take on 2022 and 2023? You wanted to bring in a change. कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सेंसिटिव है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऐसे। हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज इंटरव्यू में दी जाती है कल्चरल फिटनेस के ऊपर ही। तो वी वर्किंग ऑन इट पर्टिकुलरली कि जो हमारी वैल्यूज डिफाइन है उसके साथ कितनी कंपैटिबिलिटी आ रही है, राइट? तो उसको हम बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं। आपके जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं जो हम बात करते थे, जैसे अहमद साहब ने बात की थी कि टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है। लाइक जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी पल्स देख के आपको आइडेंटिफाई करने उसके बाद कहता है सीटी स्कैन करवाना है, एमआरआई करवाना है, उसकी बात की चीज़ है। सो आपको फिजिकली मिलना ही होगा सो दैट इन ऑर्डर टू गेट द रियल फीलिंग। और जॉब टू जॉब भी वेरी कर रहा होगा। फॉर सर्टेन पोजीशन, फॉर एंट्री लेवल पोजीशन यू माइट टेक एज वहाँ पे टेस्ट की बजट बनती है, आप उनसे टेस्ट ले लें, बट फॉर सीनियर पोजीशन टेस्ट इररिलेवेंट हो जाते हैं टाइम। अब मतलब आप हर दफा वो नहीं कर पाएंगे। यस, आपको पल्स मिल सकती है। What we have done in our organization, we have started few programs in order to gauge the engagement level. Engagement एक तो जैसे सुरेश ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि एक ये था कि उससे पूछ रहे कि भाई कैसे तुम फील कर रहे हो। वन अदर वन इज हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया HR पल्स के नाम से। यू नो पीपल एक्चुअली व्हाट दे फील और वो क्या चाह रहे हैं। सो वही आपका कल्चर बिल्ड करता है ना जो वो चाहते हैं। हमने सेलिब्रेशंस को ऐड ऑन किया, मतलब बर्थडेज हर जगह पे होती है, हमने वो किया। एनिवर्सरीज को इनकॉर्पोरेट किया, इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया, जिसपे उनको फील होता है। जो मिलेनियल्स हैं या मतलब जो नई जनरेशन existing लोगों के लिए हो गया। So you will bring in people from outside in these the next couple of years. तो क्या वो ऑनलाइन टेस्टिंग के बाद और इस डिजिटाइजेशन सिनेरियो के बाद कैन दे बी एबल टू एक्चुअली बिल्ड अप द कल्चर और सस्टेन द कल्चर? या एग्जैक्टली हम वही टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वो उसके साथ मैच करे, बिकॉज़ हमारी जो हमें इंटरनली पल्स आ रही है वो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगेन वही बात है, पॉसिबिलिटी ये है बट यू आर इन्फॉर्म्ड, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करते हैं। ठीक, अच्छा अब कमिंग बैक टू 2022, यू नो आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ टेक्नोलॉजी। अहमद साहब जैसे कह रहे थे बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजी को हम यूज करना चाहते हैं, हम एआई को भी यूज करना चाहते हैं, हम मतलब बिकॉज यू नो हम लेबर इंटेंसिव नहीं है। Again, we are 1500 people organization, जिसमें से 600 हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, बाकी नॉन मैनेजमेंट स्टाफ। तो फोकस हमारा अगर मैनेजमेंट स्टाफ के ऊपर है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर टेस्ट को हमने ऑनलाइन के ऊपर, साइकोमेट्रिक के ऊपर, ये इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो वी वर्किंग ऑन इट और इसके साथ हम कितना मीनिंगफुल इसको कन्वर्ट करें। अहमद भाई, आप के कंसल्टेंसी अगेन एज आई सेड सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल,
कंसल्टेंसी में क्या भूमिका में जाना चाहेंगे 22-23 में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ना कर रही हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू योर पीपल, योर clients? Again, we are already doing a number of innovation and we are bringing in new platforms for both organizations as well as the candidates, because we serve both sides of the spectrum. So उसमें हम जो इस वक्त and you know, I just want to share some figures with you. हम आप बहुत बात करते हैं कि जी LinkedIn is the biggest sourcing channel now when it comes to talent acquisition, which is also to some extent true, because if you look at the memberships of LinkedIn, it is now the third largest country in the world after India and China. Wow. So LinkedIn तो growth तो बहुत कर रहा है, लेकिन I was reading something recently which said that the other channels, the social media channels like Twitter, Instagram, Facebook, now they are growing by almost 54% versus LinkedIn when it comes to talent acquisition. So especially when it comes to the young population. So we cannot ignore those channels. We have to keep an eye on how the other social media channels are evolving. So from an organizational perspective, what we are doing is we are automating our talent acquisition process, where we will give full visibility to both the candidates and the organizations in terms of how do they track the process and where are they on the process. Something like, you know, Indeed, for example. Applicant tracking system. Applicant tracking system. Yes. And because, you know, that's a very important element. A lot of candidates feel disengaged and they drop out during the process when it comes to attraction. The other thing that we're doing is very soon the world is going to slowly move from the concept of hybrid employment to predominantly non-permanent employment, which means that you will be hired for certain projects and skill sets based on your expertise on a temporary basis. So a single, and I know a lot of you must have heard of platforms like Upwork, like Top Talent, where people are hired for a project for a certain duration and they work for multiple organizations and individuals through those platforms. So we're trying to bring something like that to the local market also, where we will give these opportunities to both the organizations and the candidates to directly interact and get hired without any discrimination when it comes to age, gender, disability. So you can work from home, you can work permanently from premises, etc., etc. So that's the other thing that we're doing. We're also planning to launch an HR certification program for the fresh candidates, because I feel there is a big gap when it comes to the readiness of the candidates after they graduate till the time they land in the corporate sector. So there are a few things which inshallah you will see coming out in the market over the next few months, and the team is already on it. Certain projects are already on the completion stage. So a lot of good things. Pakistan is a happening place, as you know, when it comes to talent, and we are trying to provide as many, as I call, resources for humans through those platforms. Great, thank you. So I'll take another 5 more minutes. If you have any questions from the audience, so please feel free to raise your hand, introduce yourself, and direct the question to the panelist. जी, please. आपकी आवाज़ मुझे तो पहुंच रही है. नाम बता दें अपना, इंट्रोड्यूस कर दें, सवाल communications company. So my question is from the gentleman from IBEX. How does one train the executives and the employees and the managers how to work remotely? Like how to be okay with working remotely? You know, like Sohail Zindani mentioned that he will get constipated at the thought of working remotely. How does one train the executives within the company to be okay with that? Well, so ये मेरे ख्याल से जो कल्चर का था, तो I was also expecting something coming from that culture as well. So thank you very much for this question. I think that's absolutely a necessary and lovely question.
In our organization, we've been lucky because we've been doing this pre-pandemic as well. Because we have offices in different time zones. तो वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं हम. Managers are in either the US or the Philippines or the UK. तो उनके साथ क्योंकि काम कर रहे होते हैं, तो वो उनके साथ calls और उनके साथ coordination remotely हो रही होती है. Even if it's in the office, but my manager is somewhere out of the country. So because that has been going on for years, and in our industry that is a pretty common occurrence. तो हमारी organization में तो कोई particular training या उसकी आदत डालने की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन बाकी organizations के point of view से अगर देखा जाए, तो it has been tough. और वो जो Zoom से जो लोगों को exhaustion हुई है with video conferencing, that has been a real phenomenon. Or how to train them, I guess that comes with technology and with time. मतलब हम फोन पे अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ WhatsApp पे या Skype पे मुल्क से जो बाहर है अपने साथ काफी अर्से से कर रहे हैं, right? So that is something that has been happening over time. So it's not such a big deal कि हमने उसको अगर अपना work को भी उस पे ले आए. So it's nothing new in that sense. And by training, I didn't literally mean how to do it, but I also mean how to be okay with, for example, a lot of business owners are uncomfortable with the idea that their people are working from home. I understand. Yeah. So that aspect I just wanted to. हाँ जी, उनको मतलब सामने चाहिए होता है कि वो नजर आता है सुबह. हाँ जी, जब ऑफिस बनाया है तो भरा भरा भी होना चाहिए ना. I know what you mean. नहीं, लेकिन अच्छा बिजनेस ओनर वो ये भी समझता है मेरे ख्याल से कि यार थोड़ी बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, दफ्तर छोटा कर दे, किराया कम हो जाए. सॉरी जी, अहमद यहाँ जैसे कोई सॉरी आप. We have tried this. हमने straight away आप एक बिल्कुल direct solution पे तो नहीं जा सकते. You have to try it in bits and pieces. हमने कुछ पहले flexibility create की. अल्हम्दुलिल्लाह our organization is pro HR, तो उन्होंने तो इसको buy कर दिया कि hybrid होना चाहिए. We went for it और हमने एक certain level तक allow भी कर दिया कि you have to decide your plan. हमें कोई एतराज नहीं. You have to be in office from 10 to 3 or maybe, और कोई और टाइम रखना है कोई भी रख लो, but after that you can go और वो कोई दिन भी आप तय कर सकते हैं. So there is no formal training as such, but हमने अपनी organization में ये वाले models 2-3 जगह पे apply कर. So that helped us. और again management की buy-in होना बहुत जरूरी, वो हमें मिल गई. तो that's a good इसमें part. ना थोड़ा सा जो आपका सवाल जो है वो again it's also cultural norms because organization already they were doing these type of things जिनका global or regional or maybe Pakistan wide setup था, they were doing to certain extent. Family owned organizations में भी अगर देखें they are very smart in terms of saving cost. अगर कोई नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल से वो उसको समझ आनी चाहिए, उसका HR को समझाना चाहिए, उसके IT को समझाना चाहिए उनको बैठ के. बट मैं अपनी जब ऑर्गेनाइजेशन में आया तो मैं आई केम फ्रॉम मल्टीनेशनल एंड रीजनल सेटअप, तो ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट था मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स कि जी हम why do I have to travel from one point to another point to another point? मैं रेंटल कॉम्प्लेक्स से निकलूँगा, DH ऑफिस जाऊँगा तो उससे अलमावा जाऊँगा तो वहाँ उधर जाऊँगा. So let's have a technology driven sort of culture in the meetings. इसमें डिसिप्लिन भी सारी चीज़ें आती हैं. So ये कल्चर बिल्ड होते होते हो रहा होता है and I think we should take some advice from good organization who were already doing that and उन्होंने उसको further कैसे उसको leverage किया. So Usmani साहब, your question sir. Mike. Thank you. Assalamu alaikum and great welcome to the great panel. Thank you. It's a good combination of industry and the resource provided. Mine is very simple. I have heard a lot of good practices, investment implications and challenges. I just want to ask one thing. Are we focusing in Pakistan with any success on gamification? Use of gamification as a source of acquiring talent? That's about it. Thank you. So depending on the industry, unfortunately, आपकी बात बिल्कुल सही है कि we are not. We should be, but we're not.
हमारे IBEX में sure we are, लेकिन in order to So आप IBEX में gamification process पे हैं आप क्या जी, for the sourcing? जी, Excellent. So थोड़ा सा बताएं. Every level, if I may ask, for specific position. Actually, just for the specific positions, but like I said, it is something in process. So we need to get more, get more used to it. Unfortunately, we are a little behind, but we're काफी behind generally, Pakistan. So आप मतलब इसका still awareness. So आप from the consultancy side आप इस gamification में आपको काम कर रहे हैं to provide services to your client? It's a work in progress. Oh, sorry. No, sorry. So, Usmani sir, to your question, I don't think that, if I have to estimate, I think more than 90% of the organizations that at least we deal with are not relying on gamification. I know some big organizations, including some MNCs and big local companies like the Embros of the world and KE probably, and a few others are using gamification as a means of acquiring talent. And we have done some research on it. First of all, they haven't yet applied it across all the different grades in the organization. Mostly they are using for the early career recruitment. And the other thing is that the candidate experience has not been necessarily very good when it comes to gamification. So that's a challenge that we see in the market. And at the moment as we speak, we don't see a big scope in the Pakistani market for gamification unless we customize it and unless we make it more simpler. So that's my take. And just I wanted to add a bit, if you allow me, on the last question about this hybrid working. I think it relates to the concept of seeing a body in the seat, right? So we were used to seeing a body in the seat when before the pandemic mostly. I worked for organizations like Unilever, for example, which had this concept of agile working even 10 years back, and they are practicing it since then. But before the pandemic, there was a concept, it was an in-out concept, timings and all, and organizations are more worried about how much time people spend in the office versus how productive they are. And I have worked in some of those organizations as well. So there was a concept of seeing a body in the seat. Now, when the pandemic hit, there was no other option but to go for hybrid and remote working. So reluctantly, organizations started getting used to it. However, I have interviewed and I have spoken to a lot of candidates where the concept of expecting or seeing a body in the seat has not changed. So I have spoken to people who want to leave some very big organizations because they think that they are expected to be sitting in front of the screen 24/7 now in the days of remote working. So there is no concept of having a break, having a downtime. So most of the organizations have gone to the other extreme while going for remote working. So people don't get any downtime, they don't get a time to commute, they don't get a time to change, to get fresh. For example, they eat and drink and do everything in front of the screen. So that concept has to, but there are other organizations which I know are managing it very, very properly. So they make sure that the concept of timings still remains intact and they give people the same feeling when they are working remotely. So it all depends on what levels of trust are you enjoying within the organization. So at the end of the day, that is the element which I see missing in most of the cases, unfortunately, and that is something we need to work on. Great, thank you very much. So I think short question. My name is Aisha Yusuf and I'm working as Associate Director Training and Development with Mr. Zafar at Accelerate Private Limited. My question is from Mr. Ahmed from HRSG.
where do you think the employability of Gen Zers stand in the Pakistani market, as in the Generation Z who are born after 95 until the early 2010s, because they are the ones who would be entering the job market now. And it's like their education has been so disrupted with online learning taking place for them in principle, and they're more comfortable, with technology, with working from home, and they're not at par with in-person interaction. So they have their own set of skills and competencies, and I'm asking this because I am a PhD candidate, and my PhD thesis is most likely going to be in this area. And I have been a university lecturer, so I have taught this set of students. So I actually worry about them. Where would their employability go in the Pakistani market concerning their set of skills and competencies? So considering the set of skill and the fast pace, maybe. Yes. Good question, Ji. Okay, so very good question. Thank you so much for this question. What I feel and what I experience also on a daily basis, that Gen Z, when we talk of the Gen Z, they are much more adaptable than, let's say, people from our generation. So they are adapting to the technology much faster than how we used to do. And the market is changing at the same pace. So the dynamics that are rolling out in the market, the Gen Z is, majority of them are keeping pace with the changing trends in the market. So they are comfortable when it comes to working remotely, working in a hybrid model. They prefer that. However, they are also very conscious about things like, balance, work-life balance, a sense of achievement. But it's very difficult to impose things on them in terms of the norms of the organization, the policies and the processes. Exactly. The resilience उनका और patience level थोड़ा सा down होता है उनका. अगर कुछ चीज उनके हिसाब से. They have a good sense of achievement. If you are able to provide them an enabling environment in the organization, they stick longer than some of their previous generations. So it's a different feeling, that's a different sense that we get, but the reality is a little different. And however, as I was saying, I feel when I talk to them that they still like to be engaged a lot. While they are adapting to technology, they still want human interaction, and they still want somebody to mentor them and guide them and lead them in the evolving. Or they guide you in terms of their own style and the way and stuff. So